Hello and welcome. You're watching Breaking News with me, Sanket Upadhyay, the only show where we get you all the views so that you get the complete picture. Now, it's been 3 days since the Maharashtra Mahabharat is unfolding in front of our eyes. And then one tries to ask this question. With 37 of Shiv Sena's MLAs with Mr. Eknath Shinde and only 13 with Uddhav Thackeray, 5 undecided, is this end of the road for Uddhav Thackeray? I mean, just imagine Balasaheb Thakray's legacy, Balasaheb Thakray's Shiv Sena, and a bulk of the MLAs, some MPs also now with Eknath Shinde, very little or dwindling support for Uddhav Thackeray, even after his emotional appeal. Is this end of the road for him? But then through the course of the day came certain very interesting comments. First, Mr. Sanjay Raut, who said, if Shiv Sena MLAs come and say that leave the Aghadi, we will do so. And then the very interesting comment of Sharad Pawar, who says, come and face the test on the floor of the House, knowing fully well that the Deputy Speaker belongs to the NCP. And thus we ask this question, is it really end of the road for Uddhav or picture Abhi Baaki hai? Let's quickly first take a look at the numbers because the math is the most important here. That's what it will boil down to. Let's take a look at this presentation. Okay, let's now talk about the numbers because ultimately it all boils down to the math. And we've been saying this for the past 3 days and the math is continuously changing. So we're having a tough time with the calculator here. But first, let's get you these two images. Images of Shinde's 34. This is an image from Surat, and then Shinde's 42, which is an image from Guwahati. And this number is only increasing. We are being told that from 42 it will increase further. Let's now quickly take a look at the math and first let's quickly put up this display to show you that image that you see on your screen right now of Shinde's 42, of which 37 are from the Shiv Sena. This is enough to be the real Shiv Sena in the assembly, which means Mr. Shinde can now, with the help of this strength, say that he is the Shiv Sena. Shinde's 42 rebels have 37 Sena MLAs and 5 independents. The minimum that is required to claim to be the new Shiv Sena or the only Shiv Sena, he has the numbers, he can say I am the Shiv Sena, and Thakray's faction is now a minority. Imagine Uddhav Thackeray in a meeting today only had 13 MLAs with him. So he is the minority now. You need 37 for the anti-defection law to not apply. He has 37. And if he is to be believed, more people are joining him. Let's take a look at how the assembly is going to look. On the screen right now, you see that the real Shiv Sena of Uddhav Thackeray is left with just 13 MLAs. 37 are with Eknath Shinde in Guwahati. 5 are still unaccounted for. We do not know where they are, whether they will go back to the real Shiv Sena or with the new Shiv Sena. NCP, which was at 53, 2 of their MLAs are in jail. If they are allowed to vote, then in the case of a floor test, this will become 53. But otherwise, right now, their strength is 51. Congress is at 44. The BJP at 106, SP at 2 and others at 27. So the total is 285 and the majority mark is 143. Now, if they get to vote, if the new faction gets to vote, they can align with the BJP and the BJP can form the government. It is possible. If you do the math, you will realize that it is possible. They can get in some support from the independents also, and I guess that seems to be the plan as of this moment. Before that, they have to write to the governor. So, in that context, let's put up this information. Next, what happens next? Shinde is likely to approach the governor because he has the numbers. He can say, look, I am the real Shiv Sena. Here are my numbers. And let's have a trust vote. And then he can decide what he wants to do next. Unless, of course, the emotional appeals or the other appeals, eventually where is this trust vote going to happen? It will happen in Maharashtra, in Mumbai. And once these MLAs land in Mumbai, what happens if many of these MLAs who are in Guwahati choose to support Uddhav Thackeray? That is why we feel the suspense continues and picture Abhi Baaki hai.
All right, let me introduce our guest this evening. Mahesh Tapase, spokesperson of the NCP. PKD Nambiar, political analyst, supports the BJP. In just a short moment, we'll have Sanjay Gupta, leader of the Shiv Sena. Mr. PKD Nambiar, so much fun, no? Absolutely. 5 days. Come on. Democracy at its peak. This is democracy, huh? NCP and Shiv Sena will not agree. Of course, definitely they will not. There is a flood of MLAs and a flood quite literally in Assam, by the way. Well, may I answer for you that? Sure. Yesterday, I was, this is the same question thrown to me by Nidhi at 9:30 last night. See, flood situation in Assam is definitely every year on year, the river Brahmaputra shows her anger. So is this year. So it's the government which is doing its best there or not is the question. But of course, I believe the government is managing the flood situation very well. On the other hand, why I talked about the democracy is that internal democracy of every political party is the very basics of our political system. Unfortunately, a large number of private limited companies are running many of our states. The time has come for all of us to put a full stop to it. And today is a remarkable day from that point of view, that one particular family has been shown the way, that arrogance of power and the power hunger, sure, which is not really... Sure, I mean, he does not have the numbers. So in principle, what you're saying is correct, that he has been shown the mirror by his own. But the point is, are you willing to conclude as of this moment that this is game over for Uddhav Thackeray? Let me take that question to Sanjay Gupta of the Shiv Sena. Sanjay Gupta, लग तो ऐसे ही रहा है, 37 विधायक लेकर के वो वहां पर शिवसेना के बैठे हुए हैं, एकनाथ शिंदे, 2/3 बहुमत से ज्यादा है विधायक उनके पास हैं शिवसेना के, which means technically he is the Shiv Sena in the विधानसभा. फिर उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं? और आपके नाक के नीचे से इतनी बड़ी रेबेलियन हो गई, आपको पता भी नहीं चला. देखिए, अभी वैसे तो इस मामले में फैसला होना है, क्योंकि ये जो भी बातें आ रही हैं गुवाहाटी से आ रही हैं. अब गुजरात में और गुवाहाटी में बैठ करके तो महाराष्ट्र सरकार का फैसला नहीं होगा, मगर जिस तरह की बातें शिंदे जी कह रहे हैं और जो विधायकों ने बात कही है, इस बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि पिछले 2-2.5 सालों में जिस तरह से हिंदुत्व का मामला हो या विधायकों की अनदेखी का मामला हो या पार्टी चीफ को जिस तरह से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने वाली बात हो, इन चीज़ों में कहीं लैक रहा है. और जो ये बात आज एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं, इसी बात को समय समय पर बहुत से नेताओं ने कहा है. मनोज जोशी साहब ने भी इस बात को कहा था कि हमारा नेचुरल अलायंस बीजेपी है, एनसीपी या कांग्रेस नहीं है. और इसी बात को प्रताप सरनायक जी ने भी बोला था कि हमें बीजेपी के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ानी चाहिए, ना कि कांग्रेस के साथ. और एक बात मैंने आपके चैनल पे आप ही के शो में बोली थी, जिसको बीजेपी के प्रवक्ताओं ने अपनी वॉल पे भी लगाया था, कि जिस तरह से नींव दिखाई नहीं देती मगर वृक्ष उसी पे खड़ा होता है, जिस तरह से नींव दिखाई नहीं देती मगर इमारत उसी पे खड़ी होती है, जिस तरह से जड़ दिखाई नहीं देती मगर वृक्ष उसी पे खड़ा होता है, ठीक इसी तरह से जिस तरह से हवा दिखाई नहीं देती मगर जीवन उसी से होता है, ठीक इसी तरह से हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी विचारधारा पर खड़ी है. और अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी विचारधारा से हटती है तो अपनी जमीन तलाशती रह जाएगी. शिवसेना अपनी विचारधारा कांग्रेस के साथ गठबंधन करना नहीं, तो आप उद्धव ठाकरे पे सवाल उठा रहे हैं. आपका कहना है कि वो अपनी विचारधारा से हट गए. नहीं, मुद्दों पर तो नहीं हटे, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन ये अपने आप में प्रमाणित इस तरह से हो जाता है कि जैसे कोई आदमी भले ही... अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं. एक सेकंड, एक सवाल मैं आपसे पूछ दूं इससे पहले कि मैं महेश जी के पास जाऊं. मुझे आपकी बात से ये लगता है, एंड आई गेट अ सेंस, सिंस the unspoken and the unsaid has happened in Maharashtra in the past, where three strange partners came together. Am I to assume that under pressure of the Shiv Sena MLAs and Uddhav Thackeray could be compelled to go back to the BJP? आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे जो हैं उनको मान जाना चाहिए, या वो ये फैसला आगे चल के ले सकते हैं कि भाई मेरे विधायक कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ चलो तो मैं जा रहा हूं? बिल्कुल ले लेना चाहिए, इसमें कोई देरी नहीं करनी चाहिए. सारी पार्टी एक तरफ जाने को है. आज बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है. आज बीजेपी के पास जिस तरह की पावर है, और बीजेपी हमारा
30 साल पुराना अलायंस है। आज पार्टी के इतने बड़े इतने लीडरांस चले गए हैं। आज मतलब इस बात को समझने में मुझे लगता है काफी देरी की है। एनसीपी और कांग्रेस, हमारा इनसे कभी भी राजनीतिक संबंध नहीं हो सकता, पर्सनल हो सकता है। राजनीतिक परिद्वेषों में इस बात को जिस तरह से कहा जाता है ये मुंबई तो संजय महाराष्ट्र में, गुप्ता जी मैं आपको बता नहीं जरा सकता। 2.5 साल बाद समझ में नहीं आई ये बात? अब 2.5 साल हो गए तो आपको समझ में, ऐसे तो आपने बड़ा डिफेंड किया अघाड़ी को। समय समय पर नहीं, समय पर क्या? बात आपने को कभी कहा भी नहीं गया है। डिफेंड किया। यू हैव समय ऑलवेज, पर। you have never made this point earlier. You have मैंने क्या always आपके defended चैनल the पर ही- alliance क्या आपके whenever चैनल you पर ही- have come. क्या आपके चैनल पर ही आपको ही मैंने ये वाली बात कही थी कि जिस तरह से हवा दिखाई नहीं देती, जीवन उसी से होता है। जिस तरह से नींव दिखाई नहीं देती, वृक्ष उसी पे खड़ा होता है। आप ही को कही थी, आप ही थे। और बिल्कुल मैंने इस बात को बोला था। और जिस तरह से नहीं, बिल्कुल बोला होगा। मैं आप पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी विचारधारा से aspersions or अगर doubting हटेगी तो अपनी जमीन your तराशती रह जाएगी। philosophy. But Mahesh Tapase, I want to come to you now. Do you now see, given the changed circumstances, a situation where an Uddhav Thackeray will be compelled? He will turn around and maybe in a few days or whenever, if he is not able to prove his majority on the floor of the House, say that my party wants that I ally with the BJP, and thus I am following what my party wants. See, he has been chief minister for 2.5 years, which is originally what he wanted. Let me tell you that the NCP and the Congress and the Shiv Sena came together in 2019 only for a simple reason that the BJP failed to keep its promise of giving the chief minister's post to the Shiv Sena. The Shiv Sena was the party which broke away from the BJP, and yes, the three parties came together and gave a formidable alliance to the No, that's why I'm asking you this question, Mr. Mahesh, that now the 2.5 years are complete, and now that there is such a rebellion in his party, which Shiv Sena has never seen in the past, he can always turn around and say that an entire chunk of my party feels that we should go back to the BJP. Thus, I am honoring their request. Sanket ji, the rebellion within the Shiv Sena prima facie seems to be fueled by the BJP. Okay. Who is taking care of the MLAs of the Shiv Sena? It was the BJP in Surat and the BJP in Guwahati. So it is definitely fueled by the BJP. It is the BJP which wants to destabilize the current political dispensation, which is in the state of Maharashtra. And they are using certain leaders of the Shiv Sena as a tool to further their cause. Last 2.5 years, BJP has tried n number of times to topple the government, but every time they have failed miserably. This time they have gone a bit too far. What Mr. Uddhav Thackeray has appealed to his legislators yesterday, that come to Maharashtra, come to Mumbai, and whatever you want to say, you please tell me on face. As a party leader, as the head of the government, if you think I am not able to lead you, I will quit. He has made a very emotional appeal to the entire cadre and the legislators of his party. Here we see that Mr. Shinde has taken lead in, revolting against his own party. But again, let me remind you, this cannot be without the tacit support of the BJP, in which we see clearly. No, which is exactly why I'm asking you this question, that will there be a situation, and we have seen the absolute unimaginable happening in the state of Maharashtra. It happened in 2019. It can very well happen now also. That Thackeray Mr. family- PKT Nambiar, what happens? What happens if an Uddhav Thackeray, say after a couple of days or after some weeks, he says that I respect the decision being made by my party members, since the majority of his party is now in Guwahati? Sanket ji, To me, I believe that it is too late. He has already lost the time. I want to But it complete was this. supposed to be done right. I'll come to you, Mahesh ji. One moment. This question was from Mr. Nambiar. Mr. Nambiar, do you think that the BJP must welcome Mr. Uddhav Thackeray? I think see, 2.5 years is a long time, but then there is always a scope in politics to come together again. But I think No, what you is need a to long look at time? that You went in. One moment. What is a long time? For 15 years, you had no alliance with the NCP, and then the first opportunity that the BJP sensed, you formed a government
with Ajit Pawar as Deputy Chief Minister. It could not last very long. May I ask you? पर आपने दोस्ती तो की ना? May I ask you something? Yeah. 105 seats. The biggest party in Maharashtra was BJP. And if the biggest party That's in not the Maharashtra point. You're saying that 2.5 years is a long time. I'm saying 15 years was longer, but you're ready to do business with the NCP for power. Will you be ready to do business with the Shiv Sena if Uddhav Thackeray comes back? That's the question. Thank you very much for joining us. I've run out of time. In fact, let's quickly play out what Sharad Pawar had to say. Interesting comment. I'm reminding viewers once again, the deputy, see, Maharashtra Vidhan Sabha does not have a speaker right now. But they do have a deputy speaker, which means he will preside over the functions. And that deputy speaker belongs to the NCP. And Sharad Pawar says, come, let's prove all of this on the floor of the House, which is the constitutional provision. What is cooking in Mr. Pawar's mind? Let's find out. प्रसिद्धी माध्यमातून काही गोष्टी पुढे आले त्या काही नाकारण्याचं कारण नाही पण ज्या वेळेला हे विधानसभेचे सभासद महाराष्ट्राच्या बाहेर गेले ते इथं आल्याच्या नंतर माझी खात्री आहे की ते ज्या पद्धतीनं त्याला नेलं गेलं त्याची वस्तुस्थिती ते लोकांना सांगतील आणि इथं आल्याच्या नंतर आपण अजूनही शिवसेनेच्या बरोबर हे स्पष्ट करतील आणि बहुमत कोणाचं आहे हे सिद्ध होईल. All right, joining us right now is Union Minister Ramdas Athawale, who's a keen observer. बहुत ध्यान से, बारीकी से ये सारी गतिविधि आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की. रामदास अठावले जी, एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत. मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, संकेत आपकी आवाज आ रही है मुझे जी. अठावले साहब, आपकी मैंने कविता भी सुनी. नहीं, हाँ, मैंने प्लेन में आपकी कविता सुनी, बात सुनी. आप बहुत बहुत ध्यान से देख रहे हैं सब कुछ महाराष्ट्र में. क्या लगता है आपको? बराबर. हाँ, अभी तो मतलब ये महाविकास आघाड़ी को सत्ता से बाहर जाने का वक्त आ गया है. उद्धव ठाकरे जी का इस्तीफा देने का वक्त भी बहुत नजदीक आ गया है और देवेंद्र फडणवीस जी का मुख्यमंत्री पद बनना तय है. एकनाथ शिंदे जी का साथ लेकर पूरी मेजॉरिटी बीजेपी की हो जाती है और सरकार बन सकती है. और एकनाथ शिंदे जी ने एक बहुत बड़ा झटका जो है, ये झटका मतलब शिवसेना को दे दिया है. असली शिवसेना किसकी है, ये सवाल अगर मुझे कोई पूछते हैं तो मैं जरूर बताऊंगा कि भाई असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ 42-43 एमएलए उनके पास जा चुके हैं और भी 4-5 एमएलए उनके पास जा सकते हैं. तो एक शिवसेना पर नामुश्की आ गई है. अठावले जी, आपने है करके एक छोटी सी कविता ही बना दी, बिल्कुल जैसे आप बनाते हैं. मैं उसमें थोड़ी सी पंक्तियां और जोड़ना चाहता हूं. क्या खरीद फरोख्त भी हो रही है? क्या विधायक गुवाहाटी में जा रहे हैं? क्या उनको बंधक बनाया जा रहा है? इसके बारे में आपका क्या विचार है? मतलब नहीं, गुवाहाटी तो मतलब अभी सभी एमएलए को साथ में ले जाना आवश्यक था, उनको संभालना आवश्यक था. जो बंड किया है उस बंड को सक्सेस करना आवश्यक था, इसीलिए उनको नजदीक रखना ठीक नहीं था. इसीलिए गुवाहाटी जैसे शहर में एकनाथ शिंदे जी ने अपने सभी एमएलए को लेकर वहाँ से चले गए हैं और भी एक एमएलए वहाँ जा रहा है. एक बहुत अच्छी बात है और उनके एमएलए बढ़ते जा रहे हैं, शिवसेना के एमएलए कम होते जा रहे हैं. तो मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे जी ने बहुत बड़ा काम किया है, शिवसेना को बहुत बड़ा झटका दे दिया है. शिवसेना ने मतलब बीजेपी को तो धोखा दिया था, अभी एकनाथ शिंदे ने शिवसेना का खोखा कर दिया है. और ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि भाई उन्होंने एक महाबंड किया है और शिवसेना को सत्ता से बाहर किया है. पर अठावले जी, मुझे बताइए, कल को अगर एक ऐसी स्थिति हो कि उद्धव ठाकरे बोले भाई मेरे विधायक चाहते हैं कि मैं बीजेपी के साथ चले जाऊं, तो ठीक है, मैं उनकी बात का आदर करते हुए मैं भी जा रहा हूं. इसका इशारा भी आज संजय राउत ने दिया. कल उन्होंने अपने भाषण में ये चीज बोला ही, मेरे सामने आकर के बोले. ऐसे में आप उनका स्वागत करेंगे?
नहीं, हम नहीं स्वागत करेंगे। अभी संजय राउत की और माननीय उद्धव ठाकरे की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने मेजॉरिटी से एमएलए आ चुके हैं। इसके पहले मैं रोज बोल रहा था कि भाई शिवसेना ने बीजेपी के साथ आना चाहिए, 2.5 साल के फॉर्मूले पर भी विचार होना चाहिए। ये बात मैं हमेशा करता रहा, लेकिन मेरे बात के तरफ माननीय उद्धव ठाकरे, संजय राउत जी ने ध्यान नहीं दिया। तो अभी मुझे लगता है कि अभी संजय राउत जो बोल रहे हैं, सब हाथ से जाने के बाद अभी बोल रहे हैं कि हम तो तैयार है। तो अभी तैयार होने से क्या फायदा है? तुम तैयार हो जाओगे तो एकनाथ शिंदे यहाँ से निकल जाएगी हमारे से। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी संजय राउत की हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ एकनाथ शिंदे आएंगे और हमारी सरकार बनेगी। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अगर कोई आपत्ति है तो आकर के मेरे चेहरे के सामने आकर के बोलो, ऐसे किसी रिजॉर्ट में से बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो एक बार शायद उनकी दूरध्वनि पर उनके मोबाइल पर बात हुई है, लेकिन एकनाथ शिंदे जी अभी वहाँ जाने के मूड में नहीं है। और जब वक्त था तब उनके साथ बात करने की आवश्यकता थी। एकनाथ शिंदे को अपनादित करने का काम हुआ, एकनाथ शिंदे को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश हुई, और उसका फायदा उठाकर एकनाथ शिंदे जी ने तय किया कि मैं उद्धव ठाकरे जी को और संजय राउत को झटका दिखाऊंगा। और उन्होंने ऐसा झटका दिखाया है कि शिवसेना के जिंदगी में इतना बड़ा झटका कभी उसको नहीं बैठा था। आपको लगता है पहली बार शिवसेना इस तरीके से टूटी और बिखरी है? इससे पहले लोग बहुत निकले हैं। आप तो महाराष्ट्र के हैं, आपने बारीकी से देखा होगा, बाला साहेब ठाकरे का भी राज देखा होगा। आपको लगता है ये पहली बार ऐसा हुआ है कि शिवसेना बहुत बुरी तरीके से टूटी और बिखरी है? हाँ, तो मतलब एक बार हमारे छगन भुजबल जी कुछ 10-15 एमएलए को लेकर बाहर निकले थे, कांग्रेस पार्टी में आए थे। तो उसके बाद नारायण राणे जी मतलब शिवसेना से बाहर आए थे, राज ठाकरे भी शिवसेना छोड़कर बाहर आए थे। लेकिन इतने एमएलए तोड़कर कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ था। पहली बार एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में 42 एमएलए टूटकर आना, ये बहुत बड़ी बात है। शिवसेना को बहुत बड़ा खतरा पैदा हुआ है, और ये पहली बार इतना महाबंड हो गया है कि शिवसेना अभी नज़र नहीं आ रही है। शिवसेना को देखना है तो एकनाथ शिंदे की तरफ देखना होगा, और असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की होगी, ऐसा मेरा मानना है। आपको लगता है ठाकरे परिवार का जो वर्चस्व था शिवसेना पर वो खत्म हो गया है? उनका जो इकबाल था शिवसेना पर वो खत्म हो गया है, कंट्रोल? हाँ, मतलब अभी हाँ, तो जो कंट्रोल था, जो खतरा था, जो कंट्रोल था, ये कंट्रोल अभी पूरा खत्म हो गया, ऐसा नजर आ रहा है। इतने एमएलए बाहर आना ये कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन उद्धव ठाकरे जी को छोड़कर इतने एमएलए बाहर आना ये अच्छी बात नहीं है। और एकनाथ शिंदे भी शिवसेना के हैं, वो भी बाला साहब ठाकरे के अनुयायी है, वो फैमिली के नहीं है, लेकिन उन्होंने शिवसेना बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कष्ट उठाया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि भाई असली शिवसेना जो है, ये असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की होनी चाहिए, और भविष्य में ऐसा ही हो सकता है। लेकिन मैं एक सवाल आपसे फिर पूछता हूं, कल को अगर एक ऐसी स्थिति बने कि उद्धव ठाकरे बोलें कि चलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ या इस गठबंधन के साथ वापस आ जाता हूं, तो आपको लगता है वो दरवाजे खुले रहने चाहिए बीजेपी की तरफ से? मुझे लगता है कि अभी वो क्या करना है उसके बारे में बीजेपी निर्णय ले सकती है, लेकिन फिलहाल अभी उद्धव ठाकरे जी की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार बनाने के लिए एकनाथ शिंदे ही ठीक है, और अगर उद्धव ठाकरे जी बोलेंगे मैं आ रहा हूँ, तो एकनाथ शिंदे जी बोलेंगे कि मैं नहीं भी रहूँगा, तो फिर मेजॉरिटी होती नहीं है, सरकार नहीं बनती है। अभी बीजेपी को एकनाथ शिंदे को साथ में लेकर ही सरकार बनानी होगी। बाद में उद्धव ठाकरे जी का क्या होता है उस पर चर्चा बाद में हो सकती है, तो उस पर बीजेपी निर्णय लेगी। लेकिन अभी फिलहाल मेरा मानना है कि उद्धव ठाकरे जी को तो नहीं लेना चाहिए, अभी एकनाथ शिंदे जी को ही लेकर सरकार बनानी चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे, देखिए आप कवि हृदय हैं, आप झटपट एक कविता बना देते हैं या कुछ शब्दों को पिरो करके मौजूदा स्थिति है उसको बयान कर देते हैं, तो इस स्थिति पर आप क्या बोलेंगे? कुछ सोचा तो होगा ही आपने। हाँ, तो मतलब जो अभी बीजेपी को
देने वाले हैं एक बहुत बड़ी साथ, जो बीजेपी को देने वाले हैं बहुत बड़ी साथ, उनका नाम है शिंदे एकनाथ। ये तो है अंदर की बात, ये तो है अंदर की बात। और एकनाथ शिंदे जी ने दे दी है शिवसेना को लात। अच्छा जी, चलिए रामदास ठीक है। अठावले, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन एनडीटीवी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।